I welcome you all, my dear students. Today we are going to study about commercial mathematics exercise 4.2. Before starting this exercise, हमें पता होना चाहिए कि दो क्वांटिटी जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में। अब ये इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उसका ये रूल है, जब भी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो और उनका रेशियो आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मिल रहा हो और पॉजिटिव मिल रहा हो, then we can say that the given two quantities are in direct variation. Now what does that means? आप देख सकते हैं यहाँ दो डिफरेंट क्वांटिटी है, एक आपको टाइम दिया है, टाइम विच इज इन आवर्स, और एक आपको डिस्टेंस दिया है, दूसरा क्वांटिटी विच इज इन किलोमीटर. सपोज द टाइम इज आवर x quantity and the distance is our y quantity. So now we need to check the ratio in each column. So that will be 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 8 are 16. So the final value we are getting is 1 by 48. If in each column we are getting the same value, then we can say that the given two comparison of two quantities are in direct variation, like 3 by 144. Okay, if you cancel 3 ones are 3, 3 fours are 12, carry forward 2, 3 eights are 24. Here also we are getting the same constant value, that is 1 by 48. Now let us go ahead with the next 4 by 192. Now 4 ones are 4, 4 fours are 16, and carry forward 3 4 8s are 32. So here also we are getting the constant ratio, that is 1 by 48. So here you can see that whenever we are comparing the both of the quantity, we are getting a constant value, that is 1 by 48, and that is positive. So we can say that the given table is in direct variation. So then what do you mean by indirect variation? Now we need to understand inverse variation. What do you mean by inverse variation? जब भी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मिल रहा हो, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं. दैट मीन्स आप नीचे टेबल देख सकते हैं. हियर इट इज द बेस्ट एग्जांपल. जैसे एक कॉलम है नंबर ऑफ मैन विच इज ऑफ वन क्वांटिटी, यू कैन नेम इट एज सपोज एक्स क्वांटिटी, एंड वन इज द नंबर ऑफ डेज विच यू कैन टेक इट एज वाई क्वांटिटी. तो हम हर कॉलम में उसका प्रोडक्ट करके देखेंगे अदर वी आर गेटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू और नॉट. सो 20 टेंस वी आर गेटिंग 200. Next is 10 into 20. 10 into 20 is also 200. Next is 5 into 40. 5 into 40 is also 200. That means in each and every column we are getting a constant value. So we can say that the given table so that we can say that the given table vary inversely. तो इससे हमें एक दो चीज पता चलता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. आप यहाँ देख सकते हैं इनवर्स वेरिएशन के टेबल में, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे नंबर ऑफ मैन अगर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज उसी के साथ साथ इंक्रीज होते जा रहा है. सो दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरे तरफ दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए. देन वी कैन से दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अदरवाइज अगर दोनों एक साथ डिक्रीज या एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. So let's start with question number 1, exercise 4.2, which says a journey takes 3 hours at an average speed of 45 km per hour. How long will the same journey take at an average speed of 60 km per hour? यहाँ पे स्पीड और टाइम को कंपेयर कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लेगा अगर वो अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है. तो सबसे पहले जो हमें नहीं पता है वो हम लिख लेंगे. लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x hours. We'll make a table. There are two things they are comparing. The first is speed. We'll write down the speed, which is given in kilometer per hour. Next is the time they are given, time which is given in hours. Now we will put the value one by one. इसके बाद हमें समझना होगा कि ये कौन से वेरिएशन में, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इफ ही इज going in a speed of 45 km per hour, he is covering the distance in 3 hours. And suddenly if he increases his speed, how much time is required to complete the journey? तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो ये ऑपोजिट हो रहा है. ऑपोजिट मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो यू राइट डाउन इट इज एन इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन आपको क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टू क्वांटिटी. सो विल कंटिन्यू सॉल्विंग दैट. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटी will be equals to the product of second two quantity. Now into 60 आप इधर भेजेंगे तो बन जाएगा divided by 60, that will be equals to x. Now we will cancel it with the table of 3. 3 ones are 3, here it will be 3 2 is 6, 3 0 is 0.
then again 5 9s are 45, 5 4s are 20. So we are getting the required time as 9 by 4 hours. Now you can convert this particular thing into mixed fraction. How? I'm going to tell you. So we'll convert it into mixed fraction and this will become QR by D, that is 2 1 by 4 hours. Now ये proper way में नहीं है. 2 is in completely hours. 1 by 4 hours can be converted into minutes when you will multiply it with 60. So we can say that 4 ones are 4. Here also 4 ones are 4. Carry forward 2. 4 5s are 20. So the required time is 2 hours and 15 minutes. Now let's solve question number 2. At a military camp, 60 men need 75 kg of rice per day. If 20 men leave the camp on a certain day, how many kg of the rice will be needed on that day? So how many required amount of rice पूछ रहा है. So let the required amount of rice be x kg. ये हो गया. अब हमको कॉलम बनाना है ताकि हम देख सके क्वांटिटी को कंपेयर कर सके कि वो डायरेक्ट है कि इनवर्स है. सबसे पहले नंबर ऑफ मैन है और दूसरी तरफ दिया राइस. सो आफ्टर राइटिंग दिस, let us start writing their value which is given to us in the book. Now the first is 60 men require 75 kg of rice to eat per day. If 20 men leaves the camp, out of 60 अगर 20 men camp को leave करते हैं तो कितने बच जाते हैं. 60 minus 20 is 40. So now how much rice is required per day? So let it be x. First of all you can see that अगर number of men कम हो रहे हैं तो राइस जो है खाने की क्वांटिटी वो भी डिक्रीज होगी. सो दैट मीन्स अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. तो इट इज अ पार्ट ऑफ विच वेरिएशन? इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. सो वी विल राइट डाउन इट इज इन direct variation. And what is the rule of direct variation? The ratio of first two quantities should be equal to the ratio of second two quantity. So we will write down 60 by 75 should be equals to 40 by x. Now let us do the cross multiplication. So that will become x into 60 is equal to 75 into 40. So into 60 will go that side. It will become divided by 60. Then we are going to cancel. 0 0 is going to be cancelled. 2 2s are 4. 2 3s are 6. Then here 3 2s are 6. 3 5s are 15. And you know the double of 25 is 50. So the required amount of rice we'll write down. Hence required amount of rice is how many kg? Required amount of rice equals to 50 kg. So now let's start with question number 3. It is given a supply of food will last 21 days for 40 men. कुछ food store करके रखा गया है 40 men के लिए जो 21 days तक चलेगा. How long will the same supply of food last if there had been 30 men? Suppose अगर 40 men से आदमी कम हो गए हैं तो वो food और कितने दिन चल पाएगा. आदमी ज़्यादा है तो जल्दी खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन आदमी अगर कम हो गए तो खाना ज़्यादा दिन तक चल पाएगा. So again how long बोल रहा है. So let the required time be x days. We'll write down let the required time be x days. Now again we need to make a table. The first is number of man and the second table is for number of days, because we need to compare and then we will decide either it is indirect or either it is indirect. So what they are saying, if 40 men are there, they can eat the food for 21 days. So similarly 30 men can eat the same amount of food for how many days, and that is x. So मैंने बताया एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो ऑपोजिट हो रहा है. तो वी विल राइट डाउन इट इज एन इनवर्स variation. So if it is an inverse variation, what is the rule? The product of first two quantity should be equals to the product of second two quantity. Now into 30 will go that side, that will become divided by 30. So 0 0 will get cancelled, and in the table of 3, 3 7s are 21 and 7 4s are 28. So what is the required number of days? Therefore required time is equal to 28 days. Next is question number 4. A brick work in a factory can be completed in 24 days by 30 bricklayers. How many men are needed to complete it in 20 days? ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, बट कम आदमी काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम लगा रहे थे. तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी.
So that means it is opposite. So first we'll write down let the required number of man be x. So we'll write down let the required number of man be x. ये हो गया. अब हम टेबल बनाएंगे कंपैरिजन करने के लिए. एक है how many number of man is required to complete for how many number of days. So we will write according to the thing which is given to us. Number of man is given as 30 man can finish the work in 24 days. So how many man is required to complete the work in 20 days? So now I told you if one quantity is decreasing, the other will increase. So they will both are opposite to each other. So that means it is an indirect variation. So we will write down it is an indirect variation. Now we'll apply the rule of this. What is the rule? The rule is the product of first two quantity will be equals to the product of second two quantity. Now in 220 will go that side. You know it will become divided by 20, and that will tell us the number of required man. 0 0 will get cancelled. 2 ones are 2, 2 twos are 4, and you know that 12 threes are 36.